Hello everyone. So we will start here geometrical optics. We have learned that light in many cases behaves as a wave of short wavelength. A ray of light gives the direction of propagation of light. In the absence of an obstacle, the ray advances in a straight line without changing direction. When the light meets a surface separating two transparent media, reflection and refraction occurs and the light rays bend. Light rays also bend around the edges of obstacle, limiting the wave front. But as the wavelength of light is usually much smaller than the size of obstacle, this diffraction effect can usually be neglected. We learn we then deal with geometrical optics. तो यहाँ पर एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या बताया कि हमारी जो लाइट है वो ट्रेवल तो वेव के फॉर्मेट में करती है, लेकिन क्योंकि उसके सामने जो ऑब्जेक्ट होता है जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है, उसके कंपैरिजन में इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट एंड दिस इज व्हाट वी डील एज ए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ओके, चलिए यहाँ पे एक एक करके देखते हैं. पहला है रिफ्लेक्शन एट ए स्मूथ सरफेस. अ लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बाय स्मूथ सरफेस इन अकॉर्डेंस विद द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दूसरा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the reflecting surface are coplanar. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है ये कोप्लेनर, सो दे लाई इन द सेम प्लेन. दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉइंट एस से यहाँ से एक रे जो जा रही है ऑब्जेक्ट पर हिट करती है नॉर्मली, ओके, वो रिफ्लेक्ट होती है इन द सेम लाइन, एंड सेकेंड रे विच इज़ गोइंग अलोंग एस बी, ओके, ये रिफ्लेक्ट कर रही है एट एन एंगल आर वेर आई एंड आर बोथ आर इक्वल. ओके, तो फिगर और बिकॉज ऑफ दैट यहाँ अगर कोई ऑब्जर्वर है तो वो ऑब्जर्वर को जो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ओके, रे जो उसे फील होगी, ये जो रे है और ये जो रे है, ही फील दैट कि दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट आई, एंड उसे ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखाई देगा, आई पर दिखाई देगा. फिगर 18.1 Figure 18.1 shows the point source as placed before a plane mirror. Consider a line ray SA fall normally on the mirror. This ray is reflected back along AS. Consider any other ray SB making an angle I with the normal. It is reflected along BC. Suppose AS and BC meet at point I. AS एंड जो बी सी है ये अगर एक्सटेंड किया तो दे मीट एट पॉइंट आई. when produced behind the mirror, it is simple to show that the triangle SAB and triangle ABI are congruent and SA equal to AI. Thus, all the reflected rays meet at I when produced behind the mirror. And I receives the reflected ray, feels that the rays are diverging from the point I. The point I is called the image of the object S. The basic law of reflection are same for plane and curved surface. A normal can be drawn from any point on the curved surface by first drawing the tangent plane from that point and then drawing the line perpendicular to that plane. Angle of incidence and reflections are defined from this normal. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. The incident ray, the normal and the reflected ray are in the same plane. तो आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है ये सेम प्लेन में होंगे. यहाँ पर ये कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं. यहाँ पर भी आई इज टू आर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा. स्फेरिकल मिरर, a spherical mirror is a part cut from a hollow sphere. Spherical mirror are generally constructed from glass. One surface of the glass is silvered. The reflection take place at the other surface.
If reflection take place at the convex surface, it is called convex mirror, and if the reflection take place at the concave surface, it is called the concave mirror. Generally, a spherical mirror is constructed with a circular boundary. Generally, a spherical mirror is constructed with a circular boundary. The center of the sphere of which the mirror is a part is called center of curvature of the mirror. The radius of this sphere is called radius of curvature of the mirror. The point on which the point on the mirror at the middle of the surface is called its pole. The line joining the pole and the center of curvature is called the principal axis. Focus. Suppose, तो फिलहाल ये जो चैप्टर है ये हम HC वर्मा बुक से कर रहे हैं. Focus. Suppose a light beam traveling in a direction parallel to the principal axis is incident on a concave mirror if the aperture of the beam is small so that the light falls nearer the pole. Only all the reflected rays cross the principal axis at nearly the same point. This point, when reflected rays converge, is called focus of the mirror. At this point, where the reflected ray converge, is called the फोकस ऑफ द मिरर. तो यहाँ पर रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पर मर्ज होते हैं, कन्वर्ज होते हैं. इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन. Again, if the incident parallel beam has a smaller aperture, the reflected rays appears to diverge from a point on the principal axis. This point is the focus of a convex mirror. The plane through which the focus and perpendicular to the principal axis is called focal plane. The distance of the focus from the pole is called the focal length of the mirror. The plane through the focus and perpendicular to the principal axis is called focal plane. Okay. The distance of the focus फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. तो यहाँ पर फोकल प्लेन और फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ फोकस का पोल से डिस्टेंस है, और फोकल प्लेन क्या है, फोकल प्लेन एक प्लेन जो फोकस से पास होता है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, उसे हम कहते हैं फोकल प्लेन. पैरेक्शियल रेज अरे क्लोज टू द array close to the principal axis is called क्या हो गया ये, paraxial rays. Paraxial rays, what is paraxial rays? So paraxial rays array close to the principal axis is called paraxial rays. In this chapter we shall consider only the paraxial rays in the image formation. तो जो rays principal axis से close होंगी उसको हम paraxial rays कहेंगे. Image tracing. When the point object is placed before a spherical mirror of a small aperture, a point image is formed. To locate the position of the image, we draw two rays from the point object, make them incident on the mirror, and trace the reflected rays. Math papers आपके पास? हाँ, ठीक ठीक, उनके बहुत पहले के पेपर हुए हैं. Okay. Paraxial rays, image tracing. When the point object is placed before the spherical mirror, the of a small aperture, a point image is formed. To locate the position of the image, we draw two rays from the point object, making them incident on the mirror, and trace the reflected rays. The line joining the point of incident and the incidence and the center of curvature is normal. The line joining the point of incidence and the center of curvature is the normal. A reflected ray is traced by applying the law of reflection. If the reflected ray intersect the point of intersection is a real image. If the reflected rays intersect the point of intersection is the real image. If the rays diverge after reflection, a virtual image is formed at the point from where the rays seems to diverge. Figure 18.4 shows some examples. तो यहाँ पर क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रेज मीट हो रही है किसी पॉइंट पर तो वहाँ पे हमें रियल इमेज मिलेगा, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रेज डाइवर्ज हो रही है तो देन
हमें वर्चुअल इमेज मिलेगा। ओके, कहाँ पर वर्चुअल इमेज मिलेगा? जहाँ से वो पॉइंट्स डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब जहाँ से हमको फील होगा कि दे आर डाइवर्जिंग। सो यहाँ पर आप देखें, ये ऑब्जेक्ट ओ आफ्टर रिफ्लेक्शन आई पे मिला तो इमेज बना यहाँ पर। ऑब्जेक्ट ओ आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो गया, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करने पर आई पे मिल रहा है, तो आई पे इमेज बन रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रेज है, ओके, दे आर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दे आर कमिंग एट दिस एंगल, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन अगेन यहाँ पर आपका इमेज बन रहा है। ओके, सो ए बी सी, यहाँ पर ये सी डायग्राम। तो इफ द इंसिडेंट रे डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट से रेज डाइवर्ज हो रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रियल है। ओके, तो जो ऑप्शन ए फिगर ए और बी है, इसमें ऑब्जेक्ट आपका रियल है। So if the incident ray diverge from the point object, the object is called real object. Sometimes the ray incident on the mirror do not diverge from the point, rather they converge towards the mirror. In this case, the point where these rays would meet, if there were no mirror, is treated as the object. Such a point is called virtual object. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो गया? तो यहाँ पर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर हो गया, तो ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यहाँ पर आपको रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। ओके, virtual object, thus the point of intersection of the incident rays is called the object. Thus the point of intersection of the incident ray is called the object, and the point of intersection of the corresponding reflected ray is called the image. तो ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है आपका। इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज जो से उनका इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट होता है, और रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंसिडेंस होता है, इंटरसेक्शन होता है, वो इमेज होता है। साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पर इफ इन इन इमेज ट्रेसिंग वी कम अक्रॉस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, the image distance, the focal length, and the radius of curvature. A system of sign for these quantities is necessary to derive relations containing connecting them, which are consistent in all types of physical situations. We shall describe coordinate sign conventions, which is now widely used. In this method, the pole is taken as the origin and the principal axis as the x-axis. Usually, the positive of the axis is taken along the incident ray. The quantities u, v, r, and f denote the x coordinate of the object, the image, the center of curvature, and the focus respectively. Any of these quantities is positive if the corresponding point lies on the positive side of origin, and is negative if it is on the negative side. Figure 18.5 shows some typical situations. The sign of various quantities are tabulated below. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट निगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव हो रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव है, इमेज भी आपका निगेटिव है, फोकस भी निगेटिव है, क्योंकि ऑल आर ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द पोल। ओके, सेकेंड यहाँ पर बी डायग्राम देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, नहीं, ऑब्जेक्ट निगेटिव है, यहाँ पर रखा हुआ है, इमेज पॉजिटिव है, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है, फोकस नेगेटिव है। थर्ड केस में हम देखते हैं फोकस पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, और जो इमेज इसका फॉर्म हो रहा है, इमेज भी पॉजिटिव है। एंड फोर्थ केस हम देखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है, और आपका जो इमेज का डिस्टेंस है पॉजिटिव है, जो आपका फोकस है वो पॉजिटिव है। ओके, तो 18.5 यहाँ पर ये 18.5 में सारे डायग्राम्स के लिए यहाँ पर यू, वी, आर और एफ का इन्होंने क्या दे दिया? साइन दे दिया कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। इफ द लेंथ perpendicular to the principal axis are needed, if the lengths perpendicular to the principal axis are needed, we should fix the positive direction of the y-axis. Generally, the upward is taken as the positive of the y-axis and downward as the negative of the y-axis. Height along the positive y-axis are positive, and height along the negative y-axis are negative. Quite often, we shall use the word object distance and image distance for u and v. रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड आर फॉर स्फेरिकल मिरर, तो यहाँ पर यू, वी एंड आर में एक रिलेशन है। तो कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर नंबर 18.6 अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ओ of the principal axis of a concave mirror. A ray OA is incident on the mirror at A.
इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ए आई। तो यहाँ पर ये ओ ए आपका इंसिडेंट रे है, ए पे हिट करने के बाद ये अलोंग ए आई क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। अनदर नॉर्मल टू द मिरर एट पी, अनदर रे ओ पी ट्रेवल, ओ पी दूसरी रे ओ पी हमने कंसिडर कर ली, जो ट्रेवल कर रही है अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस। एज द पी ओ इज नॉर्मल टू द मिरर एट पी, द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग पी ओ, द रिफ्लेक्टेड रे पी ओ एंड ए आई इंटरसेक्ट एट आई वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर आपका ये इमेज फॉर्म हो गया। Let C be the center of the curvature. The line CA, the line CA is the normal at A. CA क्या है? It is the normal at A. Thus, the law of reflection OAC is equals to CAI. CAI is equals to theta. Okay. Let alpha, beta, gamma and theta denote the angles respectively. यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं as the exterior angle in a triangle equals the sum of two opposite interior angles। तो यहाँ पर ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे तो बीटा जो है बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा एंड योर गामा, गामा इज गोइंग टू बी इक्वल टू अल्फा प्लस टू थीटा, और आप कह सकते हैं बीटा प्लस थीटा ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर अगर मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन से हमको क्या मिलेगा, 2 बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फा। ओके, गामा प्लस अल्फा। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं ये रिलेशन की जगह ये यूज़ कर लेता कि गामा जो है गामा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस थीटा ले लेता, और जो आपका बीटा है बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस थीटा, तो अगर ये रिलेशन कंसिडर करते और सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पर हमें क्या मिलता कि गामा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा। ओके, तो गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, गामा इज इक्वल्स टू ये हो जाता 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। 2 बीटा माइनस अल्फ़ा, सॉरी 2 बीटा माइनस अल्फ़ा। तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर अल्फ़ा प्लस गामा, तो यही रिलेशन है यहाँ पर भी। ओके, इफ़ द पॉइंट ए इज़ क्लोज टू पी, इफ़ द पॉइंट ए इज़ क्लोज टू पी, इफ़ द पॉइंट ए इज़ क्लोज टू पी, द एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर स्मॉल एंड वी कैन राइट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिख सकते हैं ए पी डिवाइड बाई, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए पी डिवाइड बाई ओ पी, बीटा इज इक्वल्स टू ए पी डिवाइड बाई सी पी एंड गामा इज इक्वल्स टू ए पी डिवाइड बाई आई पी। बराबर, ये मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा है। ओके, अब क्योंकि हमारा जो 2 बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर हमें रिलेशन मिलता है as C is the center of curvature, the equation for beta is exact whereas the remaining two are approximate. As the C is the center of curvature, the equation for beta is exact whereas the remaining two are approximate. Okay, 2 AP divided by PC is equals to AP divided by PO. अच्छा, यहाँ पर बीटा का इन्होंने एग्जैक्ट लिया हुआ है और अल्फ़ा एंड गामा का इन्होंने अप्रॉक्सीमेट लिया हुआ है, अल्फ़ा एंड गामा का अप्रॉक्सीमेट लिया हुआ है क्योंकि सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो सी के लिए ये एग्जैक्ट रिलेशन रहेगा। राइट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, द पोल पी इज टेकन एज ओरिजिन एंड द प्रिंसिपल एक्सिस एज द एक्स एक्सिस, द रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी टेक द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, द पॉइंट ओ आई एंड सी आर सिचुएटेड to the left of origin. In the figure, the quantities u, v and r are therefore negative as the distance PO, PI and PC are positive. PO is equals to minus u, PI is equals to minus v
हमें पी सी इक्वल टू माइनस आर, ये सब पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r. Although the equation 18.1 is derived for a special situation shown in figure number 18.6, it is also valid in all other situations with a spherical mirror. This is because we take proper care on the sign of u, v and r. Okay. अभी एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है. अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर. ओके, कॉन्वेक्स मिरर लिया है हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर लिया है, और ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया 12 सेंटीमीटर पे. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, आपका आर जो है वो पॉजिटिव होगा, और वी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो ये इक्वेशन में आर यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो वी की वैल्यू यहाँ पर हमें 60/11 मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है. तो पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि जो इमेज है वो राइट में फॉर्म होगा. द पॉजिटिव साइन ऑफ वी शोज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर. इट इज वर्चुअल इमेज. रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पर इफ द ऑब्जेक्ट इन ओ ए इन द फिगर इज टेकन इन एट ए लार्ज डिस्टेंस, द रे कमिंग फ्रॉम ओ आर इंसिडेंट on the mirror become almost parallel. The image is formed close to the focus. Thus, if u become infinity, u become infinity. Thus, if u become infinity, v become f, v become f. तो यहाँ पर जो v है, v की जगह f सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और हमें यहाँ पर रिलेशन मिल जाएगा f इज इक्वल टू r डिवाइड बाई 2. ओके, बहुत फर्स्ट क्लास है. Equation number 18.1 may also be written as 1 upon u plus 1 upon v is equals to 1 upon f. The focus is midway between the pole and the center of the curvature. Extended object and the image and magnification. Extended objects and magnification. Suppose the object AB is placed on the principal axis of the spherical mirror with the length AB perpendicular to the principal axis. Constructed to raise BD. Constructed to raise BD and BD and BE, constructed to raise BD and BE, the first parallel to the principal axis and the other directed towards the center of the curvature. The ray BD will go through the focus F. BD will go through the focus F after reflection. The ray BE will return along EB as it hit the mirror normally. The image of B is formed at the intersection of these two reflected rays. तो इमेज इसका कहाँ पर फॉर्म होगा, तो यहाँ से ये एक रे पैरेलल गई, ओके, रिफ्लेक्ट हुई, फोकस से पास होगी, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वापस से रिफ्लेक्ट होगी सेम जगह से. तो इमेज मेरा यहाँ पर ए डैश बी डैश बन रहा है. Suppose the object AB is placed on the principal axis of a spherical mirror with the length AB perpendicular to the principal axis. Consider two rays BD and BE, the first parallel to the principal axis and the other directed towards the center of curvature. The ray BD will go through the focus F along reflection, after reflection. The ray BE will return along AB. B will return along AB as it hit the mirror normally. The image of B is formed at the intersection of these two reflected rays. Thus, the image B dash of the point B is traced. If we drop a perpendicular B dash A dash on the principal axis, it can be shown that A dash is the image of A and A dash B dash is the image of AB. Figure 18.8A and 18.8B shows the construction of two different situations. तो 18.8A and B. तो ए में हम यहाँ पर देखेंगे कॉनकेव मिरर लिया है, और बी में हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर हमने यूज किया हुआ है. Lateral magnification. So the ratio height of the image upon height of the object is called lateral or transverse magnification. क्या? The ratio of height of image upon height of object, height of image upon height of object is called lateral or transverse magnification. The height of the object, the height of the object placed perpendicular to the principal axis is taken to be positive. If the image is also of the same side of the principal axis, its height is also positive. The image is then erect. Figure 18.8b shows an example. If the image is inverted, its height is taken as negative. Consider the ray BP of the figure 18.8. 18.8 BP. BP किधर है? रे BP कंसिडर किया हमने, B से पोल की तरफ कंसिडर किया. ओके,
Consider the ray BP in the figure 18.8 hitting the mirror at the pole. The reflected ray passes through B dash as B dash is the image of B. The principal axis is normal at P to the mirror by the law of reflection. BPA is equals to APB dash. BPA is equals to APB dash. So BPA is equals to BPA is equals to A dash PB dash or AP B dash. Thus the right angle triangle ABP and A dash B dash P are similar. thus सिमिलैरिटी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि A dash B dash which is H2 AB H1 height of object PA dash is minus V and PA is equals to minus U. PA is equals to minus U. Distance towards the left are negative. तो यूजिंग ऑल दिस वैल्यूज़ यहाँ पर हमें H2/H1 ये क्या मिला -V/U मिला. सो जो मैग्निफिकेशन है वो क्या हो गया -V/U हो गया. सिंस द प्रॉपर साइन कन्वेंशंस आर यूज्ड दिस सेम रिलेशन इज ऑल्सो वैलिड इन ऑल अदर सिचुएशंस. फॉर एग्जांपल इन फिगर A dash B dash plus H2 AB 1 plus H1 PA is V and PA is minus U. अगेन ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो H2/H1 इज V/-U M इज इक्वल्स टू -V/U. तो यहाँ पर आपका जो मिरर है मिरर में आपका जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है -V/U या फिर H ऑफ इमेज अपॉन H ऑफ ऑब्जेक्ट. Refraction at the plane surface. Refraction at the plane surface. When a light ray is incident on the surface, separating the two transparent medium, the ray bend at the time of changing the medium. The angle of incidence I and the angle of reflection R follows the Snell's law. Sin I upon sin R is equals to V1/V2 is equals to mu2/mu1, where V1 and V2 are the speeds of the light in medium 1 and 2 respectively, and mu1, mu2 are refractive index of the medium 1 and 2 respectively. For vacuum, the refractive index mu is equal to 1. For vacuum, the refractive index mu is equal to 1. For air also, it is very close to 1. Consider the situation shown in figure number 18.10. A point object O is placed in the medium of refractive index mu1. Another medium of refractive index mu2 has its boundaries at PA. Consider two rays OP and OA. तो यहाँ पर OP एक वर्टिकली हमने ले लिया एंड OA ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ले लिया. OP and OA, consider the two rays OP and OA originating from O. Let OP fall perpendicular on PA and OA fall at PA at a small angle I with the normal. OP enters the second medium undeviated and OA enters making an angle R with the normal. When produced backward, these rays meet at I, which is the virtual image of O. If I and R are small. Okay. तो यहाँ पर ये केस ले लेते हैं. ऑब्जेक्ट O, ओके, P, यहाँ पर ऑब्जेक्ट O ये रह गई और ये बेंड हो गई. तो इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, इसे भी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया. तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पर ये आई डैश पे मिट कर रहा है. तो आई डैश पे क्या होगा आपका इमेज फॉर्म होगा और यहाँ पर इसी तरह से ये इधर आई पे मिट कर रहा है. ओके. अब यहाँ पर क्या बोला है कि साइन आई if I is very small, sin I, if and I are small, then sin I is equals to tan I. Sin I is equals to tan I is equals to AP/OP. AP/OP. And sin R is equals to tan R is equals to PA/PI. तो यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर ये अगर रेशियो निकाले साइन आई अपॉन साइन आर तो ये PA/PO/PA/PI. तो ये PI/ क्या हो गया PI/PO हो गया PI/PO.
and sin I upon sin r is mu 2 upon mu 1. Snell's law है ना, mu 2 upon mu 1 is equals to sin I upon sin r. Suppose the medium refractive index, so suppose the medium 2 is air and an observer look at the image from this medium. The real depth of the object inside the medium 1 is PO, whereas the depth as it appears to the observer is Pi. Writing mu 2 is equals to 1 and mu 1 is equals to mu. Equation 1 gives 1 upon mu. 1 upon mu is apparent depth upon real depth. Pi is apparent depth upon real depth. So mu is equals to real depth upon apparent depth. The image shift close to the eye by an amount. अच्छा, यहाँ पर कौन सा फिगर रेफर करने को बोला है? 18.10 रेफर करने को बोला है. 18.10 आई रेफर करने को बोला है. Okay. The image shift close to the eye by an amount. The image shift close to the eye by an amount. OI is equals to PO minus PI. Okay. So by OI distance ये जो इमेज है ये किधर शिफ्ट हो रहा है? टुवर्ड्स आई शिफ्ट हो रहा है. अच्छा, पी ओ माइनस पी आई को पी ओ से डिवाइड कर दिया और पी ओ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी ओ अपॉन पी ओ ये 1 हो गया. 1 माइनस पी आई अपॉन पी ओ, तो पी आई अपॉन पी ओ ये आपका क्या हो गया? 1 अपॉन म्यू हो गया. तो डेल्टा टी इज 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू पी ओ. पी ओ क्या है? व्हाट इज पी ओ? पी ओ आपका रियल डेप्थ कह सकते हैं, थिकनेस कह सकते हैं. So delta t, the shift towards the object is 1 minus 1 upon mu times t, where t is the thickness of the medium over the object and delta t is the apparent shift in the position towards the observer. Note that delta t is positive in figure 18.10a and negative in figure number 18.10b. अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि अ प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय अ ग्लास क्यूब mu is equals to 1.5 of the age 6 centimeter of the age 6 centimeter. By what amount will the printed letter appear to be shifted when viewed from the top? So the thickness of the cube दिया है 6 centimeter दिया है. The shift in the position of the printed letter is delta t is equals to 1 minus 1 upon mu times t is equals to 1 minus 1 upon 1.5 times 6 is equals to 2 centimeter. Okay. Critical angle की बात करते हैं. Critical angle, when a ray passes from an optically denser medium to an optically rarer medium, the angle of refraction is greater than the corresponding angle of incidence. We have sin I upon sin r is equals to mu 2 upon mu 1 is less than 1. It is we gradually increase I, if we gradually increase I, the corresponding R will also increase, and at a certain stage R will become 90 degree. Let the angle of incidence for this case be theta c. If I is increased further, there is no there is no refraction R which can satisfy Snell's law. Thus the ray will not be refracted. Entire light is then reflected back into the first medium. This is called total internal reflection. The angle theta is called the critical angle for the given pair of the mediums. Generally, the critical angle of the medium is quoted for light going from the medium to the air. In this case, mu 2 is equals to 1. Writing mu 1 is equals to mu 1 is equals to mu. Snell's law gives sin theta c upon sin 90 is equals to mu 2 is 1 divided by mu 1 divided by mu. So therefore यहाँ पर आपका जो sin theta c है, it will become sin theta c is equals to 1 upon mu and theta is equals to sin inverse 1 upon mu.
The critical angle for water is 48.2. Find the refractive index. So critical angle is given. So we can say that mu is equals to 1 divided by sine theta c. 1 divided by sine theta c is equals to 1.34. Optical fiber, the total internal reflection. So the total internal reflection is the basic principle of a very useful branch of physics known as fiber optics. An optical fiber is very thin fiber made up of glass or a refracting surface AB gets refracted along a QR. The angle of incidence and the angle of refraction are I and R respectively. The ray QR is incident on the surface AC. Here, the light goes from an optically denser medium to an optically rarer medium. If okay,
ओके, ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स
So the total internal reflection is the basic principle of very useful branch of physics known as fiber optics. An optical fiber is a very thin fiber made up of glass and plastic having a radius of the order of micrometer, that is 10 power minus 6 meter. A bundle of such a thin fiber forms the light pipe. Figure 18.11 shows the principle of light transmitted by the optical fiber. Figure 18.11b sketches the light pipe. Because of the small radius of the fiber, light going into it, making a nearly glancing incidence on the wall, the angle of incidence is greater than the critical angle, and hence the total internal reflection takes place. The light is thus transmitted along the fiber, even if the light pipe is put in a complicated shape. The light is transmitted without any appreciable loss. The light pipe usually using optical fiber may be used to see places which are difficult to reach, such as inside of a human body. For example, a patient's stomach can be viewed by inserting one end of the light pipe into the stomach through the mouth. The light is sent down through one set of fibers in the pipe. This illuminates the inside of the stomach. The light from the inside travel back through the another set of fibers in the pipe, and the viewer get the image at the outer end. The other important application, अच्छा यहाँ पर क्या किया, the light pipes using optical fiber may be used to see the places which are difficult to reach, such as the inside of the human body. For example, a patient's stomach can be viewed by inserting one end of the light pipe into the stomach through the mouth. Light is sent down through one set of fiber in the pipe. This illuminates the inside of the stomach. The light from the inside travel back through the another set of fiber in the pipe, and the viewer get the image at the outer end. The other important application of the fiber optics is to transmit communication signal through the light pipes. For example, about 2000 telephone signals appropriately mixed with light waves may be simultaneously transmitted through a typical optical fiber. The clarity of the signal transmitted in this way is much better than other conventional methods. The fiber in a light pipe must be optically insulated from each other. This is usually done by coating each fiber with a material having refractive index less than that of the fiber. The fiber of the light pipe must be optically illuminated. The fiber in a light pipe must be optically illuminated from insulated from each other. बोला है. The fibers in okay. This is usually done by coating each fiber with a material having refractive index less than that of the fiber. Okay. फिर next है prism. Figure number 18.12 shows the cross section of the prism. Figure number 18.12. ओके यहाँ पर 18.12 ये प्रिज्म दिया है. फिगर 18.12 shows the cross section of a prism. AB and AC representing the refracting surfaces. The angle BAC is the angle of the prism. Consider the prism to be placed in air. A ray PQ incident on the refracting surface AB get refracted along QR, get refracted along uh, QR. The angle of incidence and the angle of refraction are I and R respectively. The ray QR is incident on the surface AC. Here the light goes from an optically denser medium to an optically rarer medium. If the angle of incidence R dash is not greater than the critical angle, the ray is refracted in air along RS. The angle of refraction is I dash. The angle I dash is also called the angle of emergence. If the prism were not present, the incident ray would have passed undeviated along PQTU. Because of the prism, the final ray goes along RS. The angle UTS is equals to delta is called angle of deviation from triangle TQR. UTS angle UTS is equals to
एंगल यू टी एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, एंगल आर टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू प्लस एंगल क्यू टी आर क्यू, और डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू टी क्यू वी माइनस माइनस आर क्यू वी, ओके, प्लस ये एंगल के लिए वी टी आर वी माइनस क्यू आर वी, ओके। तो ये हो जाएगा आपका आई माइनस आर प्लस ये हो जाएगा आपका आई डैश माइनस आर डैश, ओके। तो कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। नाउ द फोर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रेंट है ए क्यू वी आर, ए क्यू वी आर, अगर ये क्वाड्रेंट कंसिडर करें तो फोर एंगल्स ऐड टू 360, द एंगल these four angles add to 360, so angle A plus the angle AQV is 90 degree and ARV are 90 degree, so thus angle A plus angle QVR ये दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ऑल्सो फ्रॉम द ट्राइंगल क्यू आर वी, अभी ये क्यू आर वी कंसिडर करें तो आपका एंगल आर प्लस आर डैश प्लस क्यू वी आर ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि आर प्लस आर डैश जो है इट इज इक्वल टू ए, सब्सटीट्यूटिंग डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा जो है इट विल बिकम आई प्लस आई डैश माइनस ए। एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन, ये आपका डिवीजन हो गया। सो द एंगल आई डैश इज डिटरमाइंड by the angle of incidence I. The angle I dash is determined by the angle of incidence I. Thus, the angle of deviation delta is also determined by I. For a particular value of angle of incidence, the angle of deviation is minimum. If in the situation the ray passes symmetrically through the prism, so that I is equals to I dash. The above statement can be justified by assuming that there is a unique angle of minimum deviation. Suppose when deviation is minimum, the angle of incidence is greater than the angle of emergence. Angle of incidence is greater than angle of emergence. Suppose figure 18.13 shows the situation. Figure 18.13, figure 18.12, figure 18.13 shows the figure angle of minimum deviation. The angle I dash is determined by the angle of incidence I. Thus, the angle of deviation delta can also be determined by I. For a particular value of angle of incidence, the angle of deviation is minimum. In this situation, the ray passes symmetrically through the prism, so I is equals to I dash. The above statement can be justified by assuming that there is a unique angle of minimum deviation. Suppose when deviation is minimum, the angle of incidence is greater than angle of emergence. Suppose figure 18.13 shows the situation for minimum deviation according to our assumption I is equals to greater than I dash. Now if we send a ray along SR, it will retrace the path and will emerge along QP. Thus the angle of deviation is the same as before and hence is the minimum. According to our assumption, the angle of incidence is greater than angle of emergence, hence I dash greater than I dash greater than I. So thus we get a contradiction. Similarly, if we assume that the angle of incidence is smaller than angle of emergence for minimum deviation, we again get a contradiction. Hence for minimum deviation I is equals to I dash. A relationship between the refractive index and the angle of minimum deviation. So delta minimum is equals to क्या था I plus I dash minus A is equals to 2I minus A. So your I will become A plus delta minimum divided by 2I, and R plus R dash is equals to A. So R here R and R dash will also become equal. So I become I dash, R become R dash. So here R is equals to A divided by 2 and mu is equals to sin I upon sin R. तो साइन आई अपॉन साइन एम इज इक्वल्स टू साइन आई की जगह पर ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2. द एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज स्मॉल, सो डेल्टा एम इज ऑल्सो स्मॉल. इक्वेशन 18.10 become mu is इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई 2. 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई ए हो जाएगा म्यू.
एंड डेल्टा एम इज इक्वल टू, देयरफॉर डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, म्यू माइनस वन टाइम्स ए, म्यू माइनस वन टाइम्स ए, डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन. ओके, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस. चलिए यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं. रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे.